Hello, welcome to all of you in our online classes held by Anand English Medium School. And today we are going to discuss the topic continuous charge distribution. In the previous lectures we are discussing about the Coulomb's law, Gauss law, etc. And in this topic we are discussing when charge is transferred to a body, then what happens with the charge. When we transfer or given some amount of charge to a body, then it distributed over the body in the continuous form, which are called as continuous charge distribution. देखिए, जब हम किसी बॉडी को चार्ज सप्लाई करते हैं, आवेशित करते हैं, तो वो चार्ज जो होता है उस बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वितरित हो जाता है। और ये जो वितरण होता है, एक्चुअली ये वितरण तो होता है डिस्क्रीट फॉर्म में, लेकिन जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसे डिस्क्रीट लाइंस हों, तो इनको अगर आप पार्टिकुलरली दूर से देखें तो ये लाइंस आपको कंटिन्यूअस लगती हैं। इसी तरीके से चार्ज का अमाउंट तो जो होता है किसी बॉडी पर वो डिफरेंट लाइक एज हो सकता है, लेकिन जब हम लोग टोटल माइक्रोस्टेट पे बात करते हैं तो इस चार्ज को हम लोग कंटिन्यूअस मान सकते हैं। तो किसी भी बॉडी को चार्ज देने पर जो बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है जो कि आपको हमेशा पता होनी चाहिए, जब हम किसी कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज देते हैं लाइक एज मेटल, मेटालिक रॉड, मेटालिक शीट्स और एटसेट्रा, तो वो चार्ज जो होता है उस बॉडी के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, इनसाइड नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता, यानी कि पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होकर के वो केवल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन जब यही चार्ज हम लोग किसी नॉन कंडक्टिंग बॉडीज को देते हैं लाइक एज वुड्स मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, देन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द होल वॉल्यूम। ये इनसाइड सरफेस पर मतलब कि हर जगह पे वितरित होगा, ऐसे कर लीजिए कि पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द बॉडीज, the charge distribution is of following three types, that is line charge distribution, surface charge distribution and volume charge distribution. Now we can discuss one by one. That is first of all line charge distribution. When the body is such that its cross-sectional area is very small in comparison to its length, like as rod, wire, etc., then the charge given to the body is distributed along the line, and this type of distribution are called as line charge distribution. Here the charge density are called as line charge density. Line charge density are defined as the ratio of charge given to a rod or wire to its length are called as line charge density. It is denoted by lambda. So line charge density lambda is equal to Q upon L. In differential form we can write lambda is equal to dQ upon dL, and its unit coulomb per meter. As the unit of charge is coulomb and the length is meter, then its unit is coulomb per meter. डायमेंशन फार्मूला की बात कर ले अगर हम, तो कूलॉम का डायमेंशन फार्मूला AT, यानी कि चार्ज का डायमेंशन फार्मूला AT, और मीटर यानी कि लेंथ का डायमेंशन फार्मूला L, तो इसका डायमेंशन फार्मूला जो निकल करके आता है ATL और -1 आता है। इट इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, और इसको हम लोग 1D चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कंडक्टिंग रॉड, कंडक्टिंग वायर, एटसेट्रा। दिस इज द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। Now the second type of distribution of charge are called as surface charge distribution. When the charge given to a body such as conducting sphere, conducting cylinder or 2D bodies like a seat, then the charge distribution over the surface, and this charge distribution are called as a surface charge distribution. The density are called as surface charge density. The surface charge density is defined as the ratio of charge given to a body and to its surface. So sigma is equal to Q upon S. It is denoted by sigma. Then surface charge density sigma is equal to Q upon S, and in differential form we can write sigma is equal to dQ upon ds, and its unit is coulomb per meter square, while the dimensional formula ATL power -2. It is also a scalar quantity. In the other words, we can say that this type of distribution is also 2D charge distribution. For example, seat, conducting sphere, conducting cylinder, conducting cell, etc. Volume, and the third is volume charge distribution. और जो यहाँ पे तीसरे प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि अगर मान लीजिए हम कोई नॉन कंडक्टिंग बॉडीज ले रहे हैं, तो नॉन कंडक्टिंग बॉडीज को चार्ज अगर दिया जाए तो वो चार्ज उसके इंटायर वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन चार्ज गिवन टू अ नॉन कंडक्टिंग बॉडीज, then the charge is uniformly distributed in the entire volume, and this type of distribution are called as volume charge distribution. The volume charge density is defined as the ratio of charge given to a non-conducting body to its volume, that is
rho is equal to q upon v. In differential form you can write rho is equal to dq upon dv. Its unit is coulomb per meter square and dimensional formula is ATL power minus 3, while it is also called as 3D type of distribution. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग बॉडीज दिया गया है लाइक स्फीयर, सिलेंडर एक्सेट्रा। तो अगर हम ऐसी बॉडीज को चार्ज देंगे तो ये चार्ज जो होगा उसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये रहा आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक्स ऑल ऑफ यू।